नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं खबरी लाल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस समय खबरों में हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या कहा है जस्टिन ट्रूडो ने जिसकी वजह से इस समय वो खबरों में छाए हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा एक ऐसा देश है जो हमेशा कानून के शासन के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, अगर बड़े देश बिना किसी परिणाम के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकते हैं तो पूरी दुनिया सभी के लिए एक अधिक खतरनाक हो जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि अभी भी भारत के साथ हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बेहद गंभीर मामले पर नई दिल्ली का साथ रचनात्मक ढंग से काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि भारत ने वीयना संधि का उल्लंघन किया है। नई दिल्ली ने 40 से अधिक कनाडा के राजनयिकों से राजनयिक छूट वापस लेने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ही कनाडा ने अपने राजनयिकों को भारत से स्थानांतरित कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर अपने दावों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा अभी भी भारत के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि इस साल 18 जून ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने सितंबर में देश की संसद को संबोधित करते हुए निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों को संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों का काफी तनाव आ गया था। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित करार दिया था, लेकिन भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज भी कर दिया। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत से संपर्क किया है और उनसे इस मामले की तह तक जाने के लिए मिलकर काम करने को कहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा है कि हमें शुरुआत से ही जब कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या के बारे में पता चला तो हमने अपने एजेंटों को शामिल होने की विश्वसनीय आरोपों के बारे में इनकार किया। जस्टिन ट्रूडो ने आगे कहा, हम सभी भारतीयों के साथ काम करना जारी रखेंगे क्योंकि कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियां अपना काम करना जारी रखती हैं। कनाडा एक ऐसा देश है जो हमेशा कानून के शासन के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे भी कहा है कि अगर बड़े देश बिना किसी परिणाम के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकते हैं तो पूरी दुनिया सभी के लिए अधिक खतरनाक हो जाती है। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे थे खबरी लाल। धन्यवाद। From the very beginning, when we learned of credible allegations that agents of the Indian government were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we reached out to India to ask them to work with us on getting to the bottom of this matter. We also reached out to our friends and allies like the United States and others to work on this really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law, because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. We have been very, very clear that we want to work constructively with India on this very serious matter. From the very beginning, we shared the real allegations that we are deeply, deeply concerned about, but we have reached out to the Indian government and to partners around the world to get to the bottom of this, to take it seriously. That's why we were so disappointed when India violated the Vienna Convention and arbitrarily revoked the diplomatic immunity of over 40 Canadian diplomats in India. Think about it from our perspective. We have serious reasons to believe that agents of the government of India could have been involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, and India's response is to kick out a whole bunch of Canadian diplomats by violating their rights under the Vienna Convention.
That is of concern to countries around the world, because if a given country can just decide that their diplomats of another country are no longer protected, that makes international relations more dangerous and more serious. But every step of the way, we have tried to work constructively and positively with India, and we will continue to. And that means continuing to work with Indian government diplomats. This is not a fight we want to be having right now, but we will unequivocally always stand up for the rule of law, because that's who Canada is.